ये वीडियो सोशल जस्टिस का है। सोशल जस्टिस सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे एस डी जीज़ गोल टू बी अचीव्ड बाय 2030। गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। SDG 1 नो पॉवर्टी। SDG 1 नो पॉवर्टी। SDG 2 जीरो हंगर। SDG 2 जीरो हंगर। SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन। SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन। SDG 5 जेंडर इक्वालिटी। SDG 5 जेंडर इक्वालिटी। SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। SDG 7। SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। SDG 10 reduced inequalities. SDG 10 reduced inequalities. SDG 11 sustainable cities and communities. Sustainable cities and communities. SDG 11 sustainable cities and communities. SDG 12 responsible consumption. Responsible consumption. SDG 13 climate action. SDG 13 climate action. SDG 14 life below water. SDG 14 life below water. SDG 15 life on land. SDG 15 life on land. SDG 16 peace, justice and strong institutions. SDG 16 peace, justice and strong institutions. SDG 17 partnership for goals. SDG 17 partnership for goals. सबसे पहला टॉपिक है ट्राइब्स इन इंडिया। ट्राइब्स इन इंडिया डाटा एंड फैक्ट्स। 2011 सेंसेक्स ट्राइबल्स 8.6% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। 2011 सेंसस के हिसाब से ट्राइबल्स कितनी थी? 8.6% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। 6 ट्राइबल्स का 990 था 2011 के सेंसस के हिसाब से। 990। ओवरऑल 700 ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। इंडिया में ओवरऑल 700 ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। 75 are PVTGs. 75 are PVTGs. Gond comprises the largest tribal group of India. तो कहीं कहीं भील दिया रहता है, कहीं कहीं गोंड दिया रहता है। comprises the largest tribal group of India. Health indicators 13% have diabetes. 13% have diabetes. 25% have high blood pressures. 13% have diabetes. 25% have high blood pressure. 72% यूज़ तंबाकू एज 15 से लेके 54 तक। 72% यूज़ तंबाकू एज 15 से 54। एजुकेशन इंडिकेटर्स द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी 63.1% इन 2011। द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी 63.1% इन 2011। मेल वर्सेस फीमेल। फीमेल लिटरेसी ऑफ ट्राइब्स is only 54.4% compared to male literacy of 71.7%। तो मेल एंड फीमेल की एजुकेशन लिटरेसी कितनी है? फीमेल लिटरेसी ऑफ ट्राइब इज़ ओनली 54.4 compared to male literacy of 71.7%. Nearly 50% of the children from this social group drop out while transitioning from primary to secondary grades. Nearly 50% of the children from this social group drop out while transitioning from primary to secondary grades. Employment and skilling. PESA, the Panchayat Extension to Schedule Area Act 1996. PESA, the Panchayat Extension to Schedule Area Act 1996. Janshala program. Janshala program. Ashram schools. Ashram schools. एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। ये लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के अंदर। नेक्स्ट है क्राइम अगेंस्ट ट्राइब्स। क्राइम्स अगेंस्ट ट्राइब्स। NCRB's क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट। NCRB's की क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट में क्राइम अगेंस्ट SC इंक्रीज ऑफ 13.1% ओवर 2021। क्राइम अगेंस्ट ST इंक्रीज ऑफ 14.3% ओवर 2021। तो क्राइम अगेंस्ट SC इंक्रीज ऑफ 13.1% ओवर 2021। क्राइम अगेंस्ट ST इंक्रीज ऑफ 14.3% ओवर 2021। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 46, आर्टिकल 335,
आर्टिकल 338A, आर्टिकल 342 क्लॉज 1, 5th and 6th शेड्यूल। स्कीम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, प्रधानमंत्री वन बंधु विकास योजना, प्रधानमंत्री वन बंधु विकास योजना, एमएसपी फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन, एमएसपी फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन। वन धन विकास केंद्र, वन धन विकास केंद्र ट्राइफेड चलाता है। वन धन विकास केंद्र ट्राइफेड का है। द प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, द प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कीम, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कीम। लीगल प्रोविजंस, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। नेक्स्ट है प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, से शॉर्ट में पेसा भी कहते हैं। प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006। कमिटीज़ एंड कमीशंस, कमिटीज़ एंड कमीशन। UN देबर कमेटी 1960, UN देबर कमेटी 1960 की। लोकुर कमेटी 1965 की, लोकुर कमेटी 1965 की। भूरिया कमीशन 2002 से 2004 तक। जाक्सा कमेटी 2013, जाक्सा कमेटी 2013। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGs। Data and facts. PVTGs earlier known as primitive tribal groups. PVTGs earlier known as primitive tribal groups created on the recommendation of Debar Commission 1973. Created on the recommendation of Debar Commission 1973. The highest number of PVTGs Odisha में 13 followed by Andhra. तो highest number of PVTGs हैं उड़ीसा में 13 followed by Andhra. Schemes. प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, PM जनमन। DNT डी नोटिफाइड ट्राइब्स, DNT डी नोटिफाइड ट्राइब्स। डाटा एंड फैक्ट्स। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। लेबल्ड फ्यू ट्राइब्स एज बीइंग बॉर्न क्रिमिनल्स, लेबल्ड फ्यू ट्राइब्स एज बीइंग born criminals. These acts were repealed in 1952 and the term denotified was given. These acts were repealed in 1952 and term denotified was given. तो 1952 में रिपील्ड हो गया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 और डीनोटिफाइड वर्ड दे दिया गया। स्कीम्स एंड कमीशंस। द स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ DNT सीड, स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ DNT सीड। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर DNTs, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर DNTs। डॉक्टर अम्बेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, रैनके कमीशन। नेक्स्ट है इंडिया एज अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, इंडिया एज अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। डाटा एंड फैक्ट्स। 2011 सेंसस। 121 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट हैज हैविंग एटलीस्ट 10,000 speakers. 121 languages recognized by the government as having at least 10,000 speakers. 1961 के census, 1961 census, there are 1652 major languages in India. There are 1652 major languages in India. People's Linguistic Survey of India, People's Linguistic Survey of India has identified 780 languages and nearly 250 are extinct in the past 5 decades. People Linguistic Survey of India, India has identified 780 languages and nearly 250 are extinct in the past 5 decades. UNESCO's Atlas of the World Language in Danger of Disappearing. 196 Indian languages are in danger of extinction. UNESCO's Atlas of the World's Language in Danger of Disappearing. 196 Indian languages are in danger of extinction. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है? आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 344, आर्टिकल 351,
8th schedule, constitutional provision, Article 29, Article 30, Article 344, Article 351. 8th schedule, schemes and institutions. Scheme for protection and preservation of endangered languages of India. Scheme for protection and preservation of endangered languages of India. SPPEL. National Education Policy 2020. National Education Policy 2020. 3 language formula, 2 native Indian languages including 1 regional plus English. 3 language formula, 2 native Indian languages including 1 regional plus English. Legal provisions. Official Language Act 1963. Legal provisions, Official Language Act 1963. Committees and commissions. BG Kher Committee. 1955. BG Kher Committee 1955. Promoting Hindi as official language. BG Kher Committee 1955. Promoting Hindi as official language. Kothari Commission 1964 से 66. कोठारी कमीशन 1964 से 66. 3 language formula. श्री अशोक पहवा कमेटी. 1996. प्रमोशन ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल वर्क. श्री सीताकांत मोहोपात्रा कमेटी 2003 ऑन क्लासिकल लैंग्वेज. श्री सीताकांत मोहोपात्रा कमेटी 2003 ऑन क्लासिकल लैंग्वेज. फिर से कमिटीज एंड कमीशन पढ़ लेते हैं. इंडिया एज अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी की. बीजी खेर कमेटी 1955 प्रमोटिंग हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज. कोठारी कमीशन 1964 से 66 3 लैंग्वेज फॉर्मूला. श्री अशोक पहवा कमेटी 1996 प्रमोशन ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल वर्क. श्री सीताकांत मोहोपात्रा कमेटी 2003 ऑन क्लासिकल लैंग्वेज. वुमेन एंड हेल्थ. Data and facts. National Family Health Survey 5. Menstrual hygiene. 78% of women against 58% earlier in National Family Health Survey 4. 78% of women against 58% earlier in National Family Health Survey 4. Anemia. The incidence of anemia in women is between 53% to 57%. The incidence of anemia in women is between 53.1% to 57%. Infant mortality rate per 1000 live birth 35.2 and नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 40.7 था. तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 35.2 है, 4 में 40.7 था. मैटरनल मोर्टालिटी रेट पर 1 लाख लाइव बर्थ 97. मैटरनल मोर्टालिटी रेट पर 1 लाख लाइव बर्थ 97 है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फीमेल की 71, मेल की 69. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फीमेल की 71, मेल की 69. इंस्टीट्यूशनल बर्थ 88.6%. इंस्टीट्यूशनल बर्थ 88.6%. एडोलिसेंट प्रेगनेंसी 7.9% ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 19. एडोलिसेंट प्रेगनेंसी 7.9% ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 19. स्कीम्स. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना. पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान. आंगनवाड़ी सर्विसेज. उज्ज्वला स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स. क्राइम अगेंस्ट वुमेन डाटा एंड फैक्ट्स. एनसीआरबी 2022 का डाटा है. एनसीआरबी 2022 4% इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन फ्रॉम 2021. 4% इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन फ्रॉम 2021. डोमेस्टिक वायलेंस क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स 31.4%. डोमेस्टिक वायलेंस क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स 31.4%. Dowry death 6,450 deaths decreased by 4.5%. Dowry death 6,450 deaths decreased by 45%. Rape 7.1% of committed crimes against women. Rape
7.1% 7.1% of committed crimes against women. Sexual harassment at workplace. 31% of firms are not compliant with prevention of sexual harassment at workplace. 31% of firms are not compliant with Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act. Shadow pandemic term used by UN Women for increased violence against women during COVID lockdown. Terms used by UN Women for increased violence against women during COVID lockdown. ताजी female infanticides. At least फीमेल इन्फेंटिसाइड ज़्यादा तेज हो रहा था, हर चीज़ का दवाई मत खाकर. फीमेल इन्फेंटिसाइड एटलीस्ट 9 million girls are missing in, क्या लिखा है, एटलीस्ट 9 million girls are missing in between 2000 to 2019 as a result of female infanticide. At least 9 million girls are missing in between 2000 to 2019 as a result of female infanticide. Schemes: Mission Shakti, Sabla and Samarthya Sub Scheme. Sabla and Samarthya Sub Scheme. Sabla and Samarthya Sub Scheme. Swadhar Grah Working Women Hostels. Swadhar Grah Working Women Hostels. One Stop Center Women Helpline. Mahila Police Volunteer Schemes. Mahila Police Volunteer Schemes. Nirbhaya Fund. स्त्री मनोरक्षा और सखी. Women and Indian economy. Data and facts. Periodic labor force survey. 37% of females of working age were in the labor force in 2022-23. 37% of females of working age were in the labor force in 2022-23, compared to just 23% in 2017-18. Compared to just 23.3% in 2017-18. Unpaid work. Women perform 76.2% of total hours of unpaid care work. Women perform 76.2% of total hours of unpaid care work. ILO. Informal economy. 81% women work in the informal economy. 81% women work in the informal economy. ILO. Potential to boost economy. Greater participation of women can boost GDP by 27%. Potential to boost economy. Greater participation of women can boost GDP by 27%. Contribution to GDP. 17% contribution of women to the national GDP, less than half the global average of 37%. McKinsey. Contribution to GDP. 17% contribution of women to the national GDP, less than half the global average. Global average is 37% और इंडियन वुमेन दे रही हैं केवल 17% कंट्रीब्यूशन. मैकेंजी की रिपोर्ट. Financial inclusion. Women with bank account 56% of the total bank accounts. Women with bank accounts 56% of the total bank accounts. Women in internet users 33% of the female population. Women internet user 33% of the female population. Women mobile phone users 37% of the female population. Women mobile phone users 37% of the female population. Digital literacy percentage in women. 33% of the female population. Employment. Female लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो. फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो रूरल में 41.5%, अर्बन में 25.6%. रूरल में 41.5%, अर्बन में 25.6%. अनपेड केयर वर्क 84% ऑफ द टोटल टाइम. अनपेड केयर वर्क 84% ऑफ द टोटल टाइम. Opportunity index. About 85% of the women believe they have missed out on a raise, promotion
or work offers because of their gender. Opportunity index, about 35% of the women believe they have missed out on a race, promotion or work offer because of their gender. जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 देखेंगे. जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 इंडिया के रैंक उसमें देखेंगे. इसमें 127 है. जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग देख लेंगे. स्कीम्स, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज स्माइल स्कीम. सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज स्माइल स्कीम. पीएम दक्ष प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही. पीएम दक्ष प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही. एमजी नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में एमजी नरेगा. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. स्टैंड अप इंडिया स्कीम. स्टार्टअप इंडिया स्कीम. स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी हो सकती है. रोजगार मेला. वुमेन एंड पॉलिटिकल सिस्टम. डाटा एंड फैक्ट्स. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. एकदम करंट का देखेंगे क्या रैंकिंग है इंडिया की. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडिया की लेटेस्ट रैंकिंग देखेंगे. ऑन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडिकेटर इंडिया रैंक्ड 48. ऑन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडिकेटर इंडिया रैंक्ड 48. वुमेन रिप्रेजेंटेशन. लोकसभा 4.41%, 24 elected in the first Lok Sabha, 14.36%, 78 in 17th Lok Sabha, 13.63% in 18th Lok Sabha, 74 नंबर. तो लोकसभा जो पहली लोकसभा थी उसमें 4.41% थे और नंबर में 24 इलेक्टेड इन द फर्स्ट लोकसभा. 17वीं में 14.36%, 78 मेंबर्स थी लोकसभा की वुमेंस. और 18th लोकसभा में 13.63%, नंबर में 74. राज्यसभा अराउंड 13%. इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 2023. इंडिया रैंक्स 140 आउट ऑफ 186 नेशन इन द वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द लोअर हाउस ऑफ वर्ल्ड पार्लियामेंट. इंटर पार्लियामेंट यूनियन की एक रिपोर्ट आई, उसमें क्या लिखा है, इंडिया रैंक 140 आउट ऑफ 186 नेशन इन द वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लोअर हाउस ऑफ वर्ल्ड पार्लियामेंट्स. वुमेन इन एग्रीकल्चर. शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन वुमेन एम्प्लॉयमेंट. फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. Nearly 63% of women in agriculture sectors are female. Nearly 63% of workers in the agriculture sectors are females. 63% of workers in the agriculture sectors are female. PLFS 2021-22 के अनुसार. रूरल फीमेल LFRP jumped from 24.6% to 36.6 owing to agriculture. Rural female labor force participation ratio jumped from 24.6% to 36.6% owing to agriculture. Land holding. 14% operational land holdings owned by women. Agriculture census 2015-16. 14% operational land holdings owned by women. Agriculture census 2015-16. 18% of farm families are headed by women. 18% of farm families are headed by women. NSSO. Schemes. राष्ट्रीय महिला किसान दिवस. नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. परंपरागत कृषि विकास योजना. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना. परंपरागत कृषि विकास योजना. नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. राष्ट्रीय महिला किसान दिवस. नेक्स्ट है चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न. आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 24, आर्टिकल 39 का F, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51 का K,
86th Amendment Act 2002, Constitutional Provision of Children, Article 15, Article 51 का Clause 1, Article 21A, Article 24, Article 39F, Article 45, Article 51K, 86th Amendment Act 2002, Child Population Census 2011, Child Population Census 2011, 400 millions are children in the Indian population. 400 million are children in the Indian population. Child population in the age of 0 to 6 year. Child population in the age of 0 to 6 year increase of 0.4% to 164.5 million in 2011. चाइल्ड पॉपुलेशन 0 से 18 कितनी है? 472 मिलियन. चाइल्ड पॉपुलेशन 0 से 18 साल के बीच की 472 मिलियन. चाइल्ड एडॉप्शन 29.6 मिलियन stranded 29.6 million stranded, orphaned and abandoned children in India. Just 3,000-4,000 get adopted annually. 29.6 million stranded, orphaned and abandoned children in India. Just 3,000-4,000 get adopted annually. Juvenile delinquency. NCRB 2020 report more than 30,000 cases. NCRB 2022 reports more than 30,000 cases. असर 2023 की रिपोर्ट. ओवरऑल 86.8% ऑफ 14 से 18 ईयर ओल्ड्स आर enrolled in an educational institution. असर 2023. Overall 86.8% of 14 से 18 years old are enrolled in an educational institution. However, there are notable difference visible by age, with 3.9% of 14 years old and 32.6% of 18 years old not enrolled. NCRB's 2022, the registration of crimes against children are also increased in 2022 compared to the previous year. The registration of crimes against children also increased in 2022 compared to the previous year. 10.1 million working children in the age group of 5 to 14 years. 8.1 million are in rural area, mainly engaged as cultivator 26% and agricultural laborers 32.9%. 8.1 million are in rural areas, mainly engaged as cultivator 26% and agricultural laborers 32.9%. Reports and indices. End of Childhood Index 2019. India ranks 113 out of 176 countries. यूनेस्को का ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट. 2023. COVID-19, the rapid shift to online learning left out at least 500 million students worldwide. COVID-19, the rapid shift to online learning left out at least 500 million students worldwide. एजुकेशन. प्राइमरी इनरोलमेंट है 103.4%. प्राइमरी इनरोलमेंट 103.4%. सेकेंडरी इनरोलमेंट 79.6%. हायर एजुकेशन ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 28.4%. Learning outcomes. Foundational literacy and numeracy. Over 75% learner of grade 3 without foundational skill. Foundational literacy and numeracy. Over 75% learners of grade 3 without foundational skill. Learning poverty. Around 50% of children in India are not achieving minimum proficiency level in reading and math. Around 50% of children in India are not achieving minimum proficiency level in reading and maths. Health. Stunting. 35.5% of children under 5 years were stunted. National Family Health Survey 5. Stunting. 35.5% of children under 5 years were stunted. National Family Health Survey 5. Wasting. 19.3%.
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग वास्टिंग के केसेस कितने हैं 19.3%, स्टंटिंग के केस हैं 35.5%. माल न्यूट्रिशन almost a third of Indians according to the Food and Agricultural Organization FAO report. About 194.4 million people in India, परसेंटेज में 14.5% of the population are undernourished. 194.4 million people in India, परसेंटेज में 14.5% of the population are undernourished. Under 5 mortality rate per 1000 live birth 41.9. National Family Health Survey 5. Vaccination percentage 76.1%. Vaccination percentage 76.1%. National Family Health Survey 5. Schemes for health. Mid-day meal. Second है मिशन इंद्रधनुष. थर्ड है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. सक्षम आंगनवाड़ी एंड मिशन पोषण 2.0 स्कीम. सक्षम आंगनवाड़ी एंड मिशन पोषण 2.0 स्कीम. अनीमिया मुक्त भारत अभियान. नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. चाइल्ड राइट्स. क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन an increase of 8.7% compared to 2021. Child labor census 2011, 10.1 million child laborers in India. Census 2011, 10.1 million child laborers in India. Sexual abuse, 26% increase compared to the previous year. 26% increase compared to the previous year. Child trafficking, a total of 6.036 victims have been reported to be trafficked, in which 2878 children. NCRB 2022 की रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड ट्रैफिकिंग टोटल विक्टिम 6036 victims have been reported to be trafficked, in which 2878 children थे. Schemes and conventions for child rights. UN Convention on the Right of the Child. UNCRC. India ratified in 1992. CARA क्या है? Set up under Juvenile Justice Act 2015. CARA है set up under Juvenile Justice Act 2015. National Food Security Act NFSA 2013. National Food Security Act 2013. Other schemes and institution में लिखेंगे Integrated Child Development Services, ICDS. Integrated Child Protection Scheme. Scheme for welfare of working children in need of care and protection. Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls. सबला. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना. उज्ज्वला. नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट. सक्षम आंगनवाड़ी एंड मिशन पोषण 2.0 स्कीम. पेंसिल पोर्टल. सर्व शिक्षा अभियान. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. सुकन्या समृद्धि योजना. निपुण फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. उड़ान स्कीम. लीगल प्रोविजन में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986. इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956. हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज अमेंडमेंट एक्ट 2002.
the Prenatal Diagnostic Techniques Regulation and Prevention of Misuse Amendment Act 2002, Child Marriage Restraint Act 1929, Child Marriage Restraint Act 1929, Amendment in 1979, the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, Bonded Labor System Abolition Act 1976, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, ILO Convention 139, Committees and Commission, Guru Padaswamy Committee 1976, Guru Padaswamy Committee 1979 to study issues of child labor, Senior Citizen Data and Facts, Elderly population, India's elderly population will rise from its current 60 million to over 227 million by 2050. WHO के हिसाब से India's elderly population will rise from its current 60 million to over 227 million by 2050. WHO Census 2011, there are nearly 104 million elderly person aged 60 years or above in India. There are nearly 104 million elderly person aged 60 years or above in India. 53 million females and 51 million males. 53 million males and 51 million males. 8.6% of the total population. Residents 71% रूरल में रहते हैं, 29% अर्बन एरियाज़ में. Constitutional provision Article 21, Article 41, Article 46, Article 47. Article 21, Article 41, Article 46, Article 47. Health and Social Security. About 8% elderly suffer from some kinds of disability. About 8% elderly suffer from some kind of disability. Around 40% elderly still part of labor force, primarily in informal sector. Around 40% elderly still part of labor force, primarily in informal sector. Only 18% elderly covered by health insurance. Only 18% elderly covered by health insurance. Health schemes. PM Jan Arogya Yojana, Ayushman Bharat, PM Jan Arogya Yojana. राष्ट्रीय वयोश्री योजना फ्री फिजिकल एड. राष्ट्रीय वयोश्री योजना फ्री फिजिकल एड. सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पहली है PM श्रम योगी मानधन योजना. PM श्रम योगी मानधन योजना. अटल पेंशन योजना. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ओल्ड एज प्रोटेक्शन. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ओल्ड एज प्रोटेक्शन. PM वय वंदना योजना. अन्नपूर्णा स्कीम. अटल वयो अभ्युदय योजना. एड टू ओल्ड एज होम्स. लीगल प्रोविजंस. हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट 1956. Hindu Marriage and Adoption Act 1956 makes it obligatory provision to maintain an aged parents. Hindu Marriage and Adoption Act 1956 made it obligatory provision to maintain an aged parents. Section 125 of Criminal Procedure Code. Section 125 of the Criminal Procedure Code. The elder parents can claim maintenance from their children. The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007. The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007. National Policy for Senior Citizen 2011. National Policy for Senior Citizens 2011. National Policy on Older Person 1999. National Policy on Older Person 1999. Differently Abled Person Divyang.
differently abled person divyang. Data and facts. 15% of people worldwide have some form of disability. 15% of people worldwide have some form of disability. WHO. Census 2011 NSO. About 2.7 crore persons are disabled. 2.21% of the total population. About 2.7 crore people are disabled. 2.21% of the total population. Out of 2.68 crores, 1.5 crores are males, 1.18 crores are females. 1.5 crore मेल हैं, 1.18 crore females हैं. 55% of disabled are literates. 55% of disabled are illiterate. 2011 census के according. 69% live in rural area. Only 26% are employed. Only 26% are employed according to census 2011. Disabled children. 27% of disabled children age of 5 to 19 had never attended an educational institution. Disabled children. 27% of disabled children age of 5 to 19 had never attended an educational institution. 2.2% of population some kind of physical or mental disability. Constitutional provision. Article 14, Article 15 का clause 1, Article 16, Article 21, Article 23, Article 38, Article 41, Article 43, Article 47, 7th schedule. Constitutional provision. Article 14, Article 15 1, Article 15 का clause 1, Article 16, 21, 23, 38, 41, 43, 47, 7th schedule. Schemes and institution. Accessible India. Accessible India. Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme. Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme. Gharonda Group Home for Adults. Gharonda Group Home for Adults. Niramaya Health Insurance Scheme. Niramaya Health Insurance Scheme. Sambhav Aids and Assistant Devices. Sambhav Aids and Assisted Devices. Aids and Assisted Devices. बढ़ते कदम Awareness and Community Interaction. बढ़ते कदम Awareness and Community Interaction. Sambhav Aids and Assisted Devices. Niramaya Health Insurance Scheme. Gharonda Group Home for Adults. Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme. Accessible India. Legal provisions है Mental Health Care Act 2017. Mental Health Care Act 2017. Right of Person with Disabilities Act 2016. Right of Person with Disability Act 2016. The Rehabilitation Council of India Act 1992. The Rehabilitation Council of India Act 1992. The National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999. To Mental Health Care Act 2017. Right of Person with Disabilities Act 2016. The Rehabilitation Council of India Act 1992. The National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999. Transgenders. Data and facts. Census 2011 4,87,803 0.04% of the total population. Persons in the category called others. Children 55,000 children as transgender identified by their parents. 55,000 children as transgenders identified by their parents. Constitutional provision. Article 14, Article 15 का clause 1, Article 16, Article 21, Article 23, Article 38. Schemes and institution. Smile. Support for marginalized individual for livelihood and enterprise. Support for marginalized individual for livelihood and enterprise. Smile. PM Daksh for skilling. PM Daksh for skilling. Sampahalam स्कीम केरला की है. Sampahalam स्कीम केरला की. Assistance to degree pursuing students. Assistance to degree pursuing students. Judicial pronouncements. Judicial pronouncement. Nalsa versus Union of India 2014. Nalsa versus Union of India 2014. Navtej Singh Johar Union of India 2018. Navtej Singh Johar Union of India 2018. Scheduled caste. Data and facts.
शेड्यूल कास्ट डाटा एंड फैक्ट्स रुक जा थोड़ी देर पी सेंसस 2011 सुप्रीम सेंसस 2011 scheduled caste comprise about 16.6% of India's population. Scheduled caste comprise about 16.6% of India's population. NCRB's Crime in India 2022 increase of over 13.1% in the year 2022 over 2021. NCRB Crimes in India 2022 increase of over 13.1% in the year 2022 over 2021. Crime against Dalit women rise in number of cases. Rape against SC women including minors account for 7.64% out of the total cases reported. Rape against SC women including minors account for 7.64% out of the total cases reported. Constitutional provision Article 15 का 4, Article 16, Article 17, Article 23, Article 38, Article 46, Article 243D, Article 243T, Article 330, Article 332, Article 335, Article 338, Article 340. Constitutional provision Article 15 का clause 4, 16, 17, 23, 38, 46, 243D, 243T, 330, 332, 335, 338, 340. Schemes and institutions. Pre-matric scholarship, post-matric scholarship for scheduled caste students, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, लीगल प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 1995, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, Prohibition of Employment as Manual Scavenger and their Rehabilitation Act 2013, Committees and Commission, Justice Ramchandra Raju Commission 1997, Scheduled tribes, data and facts. NCRB's 2022 report, crime against scheduled tribe rose 14.3% over 2021. Crime against scheduled tribes rose 14.3% over 2021, 8,802 cases. Census 2011, 104 million accounts for 8.6% of country's population. 104 million accounts for 8.6% of country's population. Population distribution. More than 2/3 of the ST population in 7 states: Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Gujarat, Rajasthan, Jharkhand, Chhattisgarh. Population distribution: more than 2/3 of the ST population in 7 states: Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Gujarat, Rajasthan, Jharkhand, Chhattisgarh. Crime against Adivasi women. Cases of rape against ST women account for 13.4% out of the total cases reported. Cases of rape against ST women account for 13.4% out of the total cases reported. Residents: more than 90% of tribal people live in rural area. Sex ratio among tribals is 990 out of 1000 as compared to national average of 933 per 1000. Sex ratio among tribal is 990 per 1000 as compared to national average of 933 per 1000. Health and livelihood. Life expectancy.
63.9 years. National average is 67 years. Life expectancy 63.9 years. National average is 67 years. Malnutrition. About 80% of the tribal children are undernourished and suffering from anemia. About 80% of tribal children are malnourished, undernourished and suffer from anemia. Livelihood status. 40.6% of tribal live below poverty line vis-a-vis 20.5% non-tribals. Livelihood status. 40.6% of tribals live below poverty line vis-a-vis 20.5% non-tribals. Literacy 59%, 41% of STs are illiterate. Constitutional provision. Article 15 का clause 4, Article 16, Article 38, Article 46, Article 240D, Article 243T, Article 330, Article 332, Article 335, Article 338A, Article 340. Schemes and institutions. The Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana. PMAAGY. TriFed, Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. प्रधानमंत्री जनजाति विकास योजना. प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन. वन धन विकास केंद्र. प्रधानमंत्री वन बंधु विकास योजना. एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. PM जनमन. Legal provision. The Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Right Act 2006. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Right Act 2006 FRA. Panchayat Extension to the Scheduled Area Act 1996 PESA. The Andaman and Nicobar Protection of Aboriginal Tribes Regulation 1956. The Andaman and Nicobar Protection of Aboriginal Tribes Regulation 1956. Foreigners Restricted Area Order 1963. Andaman and Nicobar Island Protection of Aboriginal Tribes Regulation 1956. Andaman and Nicobar Islands Protection of Aboriginal Tribes Regulation 1956. Population and demographic dividend. Data and facts. Census 2011. India has a total population of 121 crores or 1.21 billion. Current population 1.42 billion. World Population Review के अनुसार current population है 1.42 billion. 17.8% of the world population. 17.8% of the world population. Total fertility rate declined from 2.2 in 2015-16 to 2 in 2019-21. Total fertility rate declined from 2.2 in 15-16 to 2.1 in 19-21. Legal provisions. National Program for Family Planning 1952. National Program for Family Planning 1952. National Population Policy 2000. National Population Policy 2000. Mission Parivar Vikas. India Family Planning 2030 Vision Document. Demographic dividend. Age 15 से 59 years. 62.5% of total will peak around 2036 reaching 65%. Demographic dividend. Age 15 से 59 years. 62.5% of total will peak around 2036 reaching 65%. Labor force participation rate. 60.8%. About 40% of working age population is jobless. 60.8%. About 40% of working age population is jobless. PLFS 2022-23 के अनुसार. TFR total fertility rate
2.0 less than replacement level 2.1. Total fertility rate 2.0 less than replacement level 2.1. Indian diaspora and migration. Indian diaspora and migration. Data and facts. Indian diaspora. In 2020, about 80 million Indians migrants lived outside India. About 18 million Indians migrants lived outside India. UAE, US, and Saudi Arabia host the largest Indian diaspora. UAE, US, and Saudi Arabia host the largest Indian diaspora. NRIs and PIOs combined 29 million. NRIs and PIOs combined 29 million. All India migration rate 28.9%. All India migration rate 28.9%. Rural migration 26.5%. Urban migration 34.9%. Rural migration 26.5%. Urban migration 34.9%. फीमेल माइग्रेशन रेट 47.9%. रूरल माइग्रेशन फीमेल का 48%. अर्बन माइग्रेशन फीमेल्स का 47.8%. 86.8% फीमेल माइग्रेट फॉर मैरिज. 86.8% फीमेल्स माइग्रेट फॉर मैरिज. मेल माइग्रेशन 10.7%. मेल माइग्रेशन 10.7%. मेल का रूरल माइग्रेशन 5.9%. मेल का अर्बन माइग्रेशन 22.5%. मेल का रूरल माइग्रेशन 5.9. मेल अर्बन माइग्रेशन 22.5%. 49.6% ऑफ मेल माइग्रेट्स मूव्ड इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लगभग 50% ऑफ मेल माइग्रेंट्स मूव्ड इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंटरनल माइग्रेशन. नंबर ऑफ इंटरनल माइग्रेशन रोज टू 453.6 million. Number of internal migration rose to 453.6 million. Census 2011, more than 5 million persons have migrated to India from other countries. More than 5 million persons have migrated to India from other countries. Schemes and institutions. For internal migrants के लिए कौन सी स्कीम है? 1998 का गाइडिंग प्रिंसिपल ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट. गाइडिंग प्रिंसिपल ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 1998 का. नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी. नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी. प्रोजेक्ट चनगति बाय द केरला स्टेट गवर्नमेंट. प्रोजेक्ट चनगति बाय द केरला स्टेट गवर्नमेंट. वन नेशन वन राशन कार्ड. वन नेशन वन राशन कार्ड फॉर NRIs और PIOs. स्कीम्स एंड इंस्टीट्यूशन फॉर NRIs और PIOs. भारतीय प्रवासी दिवस. भारतीय प्रवासी दिवस. नो इंडिया प्रोग्राम. नो इंडिया प्रोग्राम. वज्र स्कीम फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च. वज्र स्कीम फॉर कोलैबोरेटिव स्कीम्स. लीगल प्रोविजन. इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स. इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन. इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन. रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979. मोटा हूं ना. OCI कार्ड होल्डर स्कीम. OCI कार्ड होल्डर स्कीम. नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू. पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू. poverty and developmental issue. Poverty and development issue. Data and facts. Number of people. Multidimensional poverty index. Multidimensional poverty index 2024 UNDP. Multidimensional poverty index 2024 UNDP. India has the largest number of people, 22.8 crore, living in poverty, followed by Nigeria. India has the largest number of people, 22.8 crore, living in poverty, followed by Nigeria. Poorest population states. Poorest population state. 61% of poor population of India live in 7 states: छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश. 61% of poor population of India live in 7 states: छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश. Progress. Since the 1991 reform, the proportion of people below the poverty line in India has
gone down from about 50% to 20% using the World Bank's $1.90 a day poverty line. Since the 1991 reform, the proportion of people below the poverty line in India has gone down from almost 50% to 20% using the World Bank $1.90 a day poverty line. Social Economic Caste Census 2011, around 6 crore households suffer from multidimensional poverty. Socio-economic caste census 2011, around 6 crore households suffer from multidimensional poverty. Poverty estimate. India still have more than 250 million people who are poor. India still have more than 230 million people who are poor. Global Multidimensional Poverty Index 2023, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के हिसाब से इंडिया स्टिल हैव मोर देन 230 मिलियन पीपल हु आर पुअर. द यूएनडीपी डिफाइन वल्नरेबिलिटी, द शेयर ऑफ पीपल हु आर नॉट पुअर बट हैव deprivations. UNDP defines vulnerability, the share of people who are not poor but have deprivations. India has some 18.7% population under this category. India has some 18.7% population under this category. India's progress in poverty reduction. India is among 25 countries that successfully halved their global multidimensional poverty index values within 15 years. India's progress in poverty reduction. India is among 25 countries that successfully halved their global multidimensional poverty index values within 15 years. Some 415 million इंडियंस escaped poverty between 2005-6 and 19 से लेकर 21 तक. सम 415 मिलियन इंडियंस escaped poverty between 2005-6 and 19 से लेकर 2019 से 21. The incidence of poverty in India declined significantly from 55.1% in 2005-6 to 16.4% in 1921. The incidence of poverty in India declined significantly from 55.1% in 2005-6 to 16.4% in 2019-21. Distribution. In India, 21.9% of the population lived below the national poverty line in 2011. In India, 21.9% of the population lived below the national poverty line in 2011. Urban poverty 13.7%, rural poverty 25.7%. Urban poverty 13.7%, rural poverty 25.7%. Poverty line. Niti Aayog, the poverty line is set at rupees 1286 per month for urban area and 1059.42 per month for rural area. Niti Aayog, the poverty line is set at rupees 1286 per month for urban area and 1059 rupees per month for rural area. World Bank, IMF, etc. on Indian poverty. World Bank, IMF, etc. on Indian poverty. International poverty line. The World Bank defines extreme poverty as someone living on less than $2.15 per person per day. The World Bank defines extreme poverty as someone living on less than $2.15 per person per day. So societal poverty line. It is a hybrid line. Combining the $2.15 a day absolute poverty line with a relative component that increases as median consumption or income in an economy rises. Next, constitutional provision. Article 16, Article 17, Article 21, Article 24, Article 39. Article 39 का clause A, Article 41, Article 42, Article 45. Constitutional provision. Article 16, Article 17, Article 21, Article 24, Article 39. Article 39 का clause A, Article 41, Article 42, Article 45. Schemes and institutions. National Food for Work Program. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना.
रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास योजना, रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अंत्योदय अन्न योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, लीगल प्रोविजन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट मनरेगा 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा 2005 provides 100 days assured employment every year to every rural household, provides 100 days assured employment every year to every rural household. One third of the proposed jobs would be reserved for women, one third of the proposed jobs would be reserved for women. Legal Services Authorities Act 1987, Legal Services Authorities Act 1987, National Food Security Act 2013, National Food Security Act 2013, Committee and Commissions, Committee and Commissions, Alang Committee 1979, Alang Committee 1979 determined a poverty line based on a minimum daily requirement of 2400 and 2100 calories for an adult in rural and urban area respectively. Alang Committee 1979 determined a poverty line based on a minimum daily requirement of 2400 and 2100 calorie for an adult in rural and urban area respectively. Lakadwala Committee 1993, Lakadwala Committee 1993 poverty line approach can be continued based on calorie consumption fixed consumption basket. Poverty line approach can be continued based on calorie consumption fixed consumption basket. Tendulkar Committee 2009, Tendulkar Committee 2009 constituted to review methodology for poverty estimation and to address the following shortcomings of the previous method. Constituted to review methodology for poverty estimation and to address the following shortcomings of the previous method. The poverty कुछ मैं यहाँ पे कुर्सी में यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे कुर्सी रख दे, वो हटा दे. Tendulkar Committee 2009 constituted to review methodology for poverty estimation and to address the following shortcomings of the previous method. The national poverty line for 2011-12, the national poverty line for 2011-12, rural rupees 816 per capita per month, rupees 1816 per capita per month, urban 1000 per capita per month. The Rangarajan Committee 2012, the Rangarajan Committee 2012, it is estimated that the number of poor was 19% higher in rural area and whopping 41% more in the rural urban area than those of the previous estimate. Rangarajan Committee, it is estimated that the number of poor was 19% higher in rural area and whopping 41% more in urban area than those of the previous estimates. Daily per capita expenditure, daily per capita expenditure rupees 47 for urban areas and rupees 32 for rural areas. 47 for urban area, 32 for rural area. Monthly per capita consumption expenditure, monthly per capita consumption expenditure 972 in rural area, 1407 in urban area, 972 in urban area, 1407 in urban areas. 5-year plans associated with poverty, 5-year plans associated with poverty. 4th 5-year plan, 5th 5-year plan, 10th 5-year plan, 11th 5-year plan. 4th 5-year plan 1966-74, it aimed at increasing national income by 5.5%. It aimed at increasing national income by 5.5%. 5th 5-year plan 1974 से 1979 mainly focused on the removal of poverty, गरीबी हटाओ. 10th 5-year plan 2002 से 2007 aimed at the reduction of poverty ratio from 26% to 21% by the year 2007.
aimed at the reduction of poverty ratio from 26% to 21% by the year 2007. 11th 5-year plan, faster and inclusive growth. Next topic है hunger, malnutrition and health. Data and facts. Stunting, 35.5% of children under 5 years were stunted. National Family Health Survey 5. 35.5% of children under 5 year were stunted. ऐसे ही याद कर लेना है. Stunted, 35.5% of children under 5 year were stunted. Wasting, 19.3%. Global Hunger Index 2023. Obesity among adults, 44 million women and 26 million men. 44 million women and 26 million men. Lancet. Obesity among children, 12.5 million children. Lancet. 12.5 million children. Lancet की रिपोर्ट. अनीमिया 25% इन मैन 15 से लेके 49 ईयर्स. अनीमिया 25% इन मैन 15 से लेके 49 ईयर्स. 57% इन वुमेन 15 से लेके 49 ईयर्स. 57% इन वुमेन्स 15 से लेके 49 ईयर्स. 31.1% इन एडोलेसेंट बॉयज़ 15 से लेके 19 ईयर्स. 31.1% इन एडोलेसेंट बॉयज़ 15 से लेके 19 ईयर्स. 59.1% in adolescent girls. 59.1% in adolescent girls. 52.2% in pregnant women. 52.2% in pregnant women 15 से लेके 49 ईयर्स तक. 67.1% in children 6 से लेके 59 मंथ तक. 67.1% in children 6 से लेके 59 मंथ तक. रिपोर्ट एंड इंडाइसिस. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की देख लेंगे. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग शायद 105 आई है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया की रैंकिंग 2024 में 105 आई है. ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2022. इंडिया इज़ ऑन कोर्स टू मीट 3 targets for maternal, infant and young child nutrition. India is on course to meet 3 targets for maternal, infant and young child nutrition. India is also among 23 countries that have made no progress or are worsening on reducing childhood wasting. India is among 23 countries that have made no progress or are worsening on reducing childhood wasting. UN FAO report. UN का FAO report. 194 million peoples go hungry every day in India. 194 people go hungry every day in India. They comprise about 23% of the world's undernourished population. They comprise about 23% of the world's undernourished population. National Family Health Survey 5. National Family Health Survey 5. More than half of the children and women are anemic in 13 of the 22 states and UTs. More than half of the children and women are anemic in 13 of the 22 states and UTs. Constitutional provision. Article 39, Article 47, Article 45, 86th Amendment 2002. Article 39, Article 47, Article 45, 86th Amendment 2002. Schemes and institutions. ICDS पोषण अभियान मिड डे मील स्कीम. ICDS पोषण अभियान मिड डे मील स्कीम. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन. अनीमिया मुक्त भारत अभियान. नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. मातृत्व सहयोग योजना. नेशनल हेल्थ मिशन. फिट इंडिया मूवमेंट. लीगल प्रोविजन. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा 2005. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा 2005. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. अर्बनाइजेशन. नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन. डाटा एंड फैक्ट्स. India's urban population expected to grow from
410 million in 2014 to 814 million by 2050. India's urban population expected to grow from 410 million in 2014 to 814 million in by 2050. Percentage of urban population. Percentage of urban population 31.14 of the टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 31.14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन projected to grow by 40% of the total population by 2031. Projected to grow by 40% of the total population by 2031. 2011 census. Urban migration. Urban migration. 20% of the total migration is from one urban area to another urban area. Urban migration 20% of the total migration is from one urban area to another urban area. Census 2011 around 17% of the urban population lives in slums. Around 17% of the urban population lives in slums. Urban financing $17 per capita per year on urban infrastructure. $17 per capita per year on urban infrastructure. Ideal spend $100 per capita per year. Ideal spend $100 per capita per year. Carbon emission. Cities occupy less than 3% of the global territorial surface but accounts for 78% of the carbon emission. Cities occupy less than 3% of the global terrestrial surface but accounts for 78% of the carbon emission. Most urbanized state गोवा है 62.2% अर्बन पॉपुलेशन. 62.2% अर्बन पॉपुलेशन. सेकेंड नंबर पे है तमिलनाडु. रिपोर्ट एंड इंडाइसिस. वर्ल्ड बैंक around 80 million people live in urban poverty with limited access to basic amenities and services. World Bank around 80 million people live in urban poverty with limited access to basic amenities and services. The World Urbanization Prospect 2018 by the UNDESA, India will have added 416 million urban dwellers by 2030. The World Urbanization Prospects 2018 by the UNDESA, India will have added 416 million urban dwellers by 2030. UN Habitat by 2030, India will have 14 major clusters of cities accounting for 40% of its GDP. UN Habitat by 2030, India will have 14 major clusters of cities accounting for 40% of its GDP. Constitutional provision, Article 48A. Constitutional provision, Article 48A, Article 51G, Article 243ZE, 74th Constitutional Amendment, 74th Constitutional Amendment Act 1976, 12th Schedule. Next है schemes and institutions. अटल मिशन, PM आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, हृदय स्कीम. अटल मिशन, PM आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, हृदय स्कीम. Reports and commissions. Second, ARC emphasize on adequate infrastructure, enhancing participation, water supply and distribution, sanitation, collection and disposal of garbage, electricity distribution, transport solution. Second, ARC emphasize on adequate infrastructure, enhancing participation, water supply and distribution, sanitation, collection and disposal of garbage, electricity distribution, transport solution. 12th five-year plan called cities as engine of economic growth. 12th five-year plan called cities as engine of economic growth.